नमस्कार बच्चों, मैं हूं मुरुगनाथन, आपके अकाउंट्स टीचर. So we are studying accounting for partnership firm fundamentals. Let's remind the previous topic we learned in the last class. What we learned in the last class? We learned the definition of partnership, and then we learned features of partnership, partnership deed, then profit and loss appropriation account. Now I start with profit and loss appropriation account. What is profit and loss appropriation account? You know, profit and loss appropriation account is the extension of profit and loss account. And why it is calculated? It is calculated to know how the profit has been distributed among the partners. All things we learned in the previous class itself. Now I am going to explain the items appears in the profit and loss appropriation account. You know, appropriation account has two sides, credit side and debit side. The credit side records all the incomes. So income of the business is profit and interest on drawing. Interest on drawing will be in the credit side of PL appropriation account, and profit will be in the credit side. And debit side, all the expenses of the firm. What are they? Salary to partner, commission to partner, interest on capital, reserves, and divisible profit are the appropriations or the expenses. That's why we debit the things. Okay. Now you may ask a doubt, sir, where interest on loan will be recorded? Interest on loan will be recorded in profit and loss account, not in profit and loss appropriation account. Why? Because interest on loan account is a charge against profit. Interest on loan account is a charge against profit. So it will be recorded in the debit side of profit and loss account. Interest on loan in the debit side of profit and loss account. It will appear in the debit side. Okay. So we may ask doubt, sir, what is the difference between charge against profit and appropriation of profit? Very good question, because it may be confuse you. Charge against profit and appropriation profit is the different thing. Let me explain the slide. Here, charge against profit means here the expenses are charged against the profit to calculate net profit. To calculate net profit. Here the expenses are charged against to calculate net profit. Then what is the meaning of appropriation of profit? Here the net profit is, here the net profit will be distributed among the partners. Here we are going to distribute the partners. What are the items may be there in here? Here salary will be there, interest on capital will be there, two commissions will be there. Even we can say reserve is also appropriation of profit. Let me once again repeat it. Appropriation and charge against profit is both are different thing. Charge against profit means here the expenses are charged against the revenue to ascertain net profit. What is appropriation of profit? Here the net profits were distributed among the partners in different heads, in salary head, in interest on capital head, and through commission head, and the balance will be distributed among the partners as a divisible profit. There is the difference between charge against profit and appropriation of profit. What is the next difference? Irrespective of profit or loss, irrespective of profit or loss, interest on loan must be provided. मान लीजिए अब कंपनी लॉस में जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा. So we have to provide interest on loan irrespective of profit or loss, just like other indirect expenses, right? But as far as profit and loss appropriation is concerned, it is given only when there is profit. Suppose in case of loss, no salary will be given, no interest on capital will be given, no commission will be given, and reserves will, there is no question for reserve at all. Okay. The second difference is when it is made. In case of loss also, interest on loan has to be provided. In case of loss, the appropriation will not be made. Then
Which come first? First, charge against profit, charge on, stop it. Okay. Then, which comes first? Charge against profit comes first, and then after charge only appropriation will be created. Then the next question arises. What are the examples of how would you divide, how would you distinguish between as per examples? Here, the examples are charge against profit is the example of interest on loan, and for appropriation of profit, salary, interest on capital, commissions and reserves are the examples of appropriation of profit. Right? So we learn profit and loss appropriation account and the difference between profit and loss appropriation account and charge against profit. Then we proceed to the next and very important one, that is interest on drawing. Interest on drawing means interest charged against the amount drawn by the partner. You know the meaning of drawing, isn't it? What is drawing? Drawing means the amount in cash or kind withdrawn by the partner for their personal use. That is called drawing. So it is as per partnership deed. If they agreed that interest on drawing will be provided, then we have to provide interest on drawing. If they doesn't ask for providing interest on drawing, no need to provide interest on drawing. So everything will be there in partnership deed. If it is given in the partnership deed that interest on drawing will be provided, then we have to provide interest on drawing. Okay. Then what is interest on drawing? Interest on drawing is the income for the business. Why? Partner has to pay interest. So it is the income for the business. How it will be calculated? Here, interest on drawing is calculated with reference to time period. Interest on drawing is calculated with reference to time period for which the money was withdrawn, right? Then interest on drawing is calculated depends upon the availability of information which is given in the question. Let's see, there are different cases of drawing. Someone draw, partners may withdraw amount from the business in a fixed manner. For example, there are two partners, partner A and partner B, right? Partner A is the habit of withdrawing money, fixed amount of money from the business each and every month. For example, Mr. A है, A क्या कर रहा है? हर एक महीना में 1000 rupees withdraw कर रहा है. हर एक महीना में 1000 rupees withdraw कर रहा है. So जनवरी से लेकर दिसंबर withdraw कर रहा है. So that money, that type of drawing is called fixed drawing. Another partner है, वो क्या कर रहा है? Unequal amount, irregular amount, different dates में withdrawal कर रहा है. वो एक अलग cases है. First case में particular partner fixed amount withdrawal कर रहा है और second case में अलग-अलग date में different amount withdrawal कर रहा है. तब इनका interest on drawing के calculations differ होगा. Let's start with when a partner withdraws fixed amount and a fixed interval, then the calculation of interest on drawing will be as follows. First, interest on drawing if a partner withdraws a fixed amount in the beginning of every month. एक partner है, partner A, ये क्या कर रहा है? हर एक month का beginning में ही business से पैसा personal use के लिए निकाल लेता है. Every month का beginning. So हम लोग accounts कब start होगा? 1st April. कब end होगा? 31st March. So 1st April में draw कर लिया. Then 1st May में draw कर लिया. 1st June में draw कर लिया. Like that 1st March तक वो draw करते जा रहा है. Fixed amount only 1000 rupees withdraw कर रहा है और regularly withdraw कर रहा है. तब हम लोग interest on drawing निकालना पड़ेगा. So formula क्या है? Interest on drawing is equal to drawing into rate of interest by 100 into average period. What is the formula? Interest on drawing is equal to total drawing
into rate of interest by 100 into average period. Here drawing will be given in the question, rate of interest is also given in the question, but here you have to calculate average period because you withdrew money every year at the beginning. So how to calculate the average period? For that also we have one more formula. What is the formula? Average period is equal to time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. Very easy formula, no? What is the formula? I repeat it. Time left after the first drawing plus time left after the last drawing divided by 2, you may get the average period. For example, in our case, Mr. A, उसका एक आदत है, हर एक महीना का स्टार्टिंग में ही वो क्या कर लेगा, बिजनेस से विथड्रॉ कर लेगा, ड्रॉइंग कर लेगा. तब उसका एवरेज पीरियड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? लेट मी एक्सप्लेन द स्केल. दिस इज द स्केल कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स. मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, राइट. नाउ हम लोग के इसमें क्या है, मिस्टर ए विथड्रॉ कर रहा है. कितना विथड्रॉ कर रहा है? 1000 विथड्रॉ कर रहा है. कब विथड्रॉ कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सो अप्रैल का फर्स्ट में ही विथड्रॉ कर लिया. हर एक मंथ का बिगिनिंग में ही विथड्रॉ करते जा रहा है. कब तक? मार्च बिगिनिंग तक विथड्रॉ कर रहा है. मार्च 1 में लास्ट विथड्रॉइंग इज मार्च 1. देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग मीन्स कब फर्स्ट ड्रॉइंग किया? ये फर्स्ट अप्रैल में किया. देन काउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. कितना टाइम बचा है अभी? फर्स्ट मंथ ऑफ अप्रैल में ड्रॉ कर लिया, तब कितना टाइम लेफ्ट है अभी मार्च तक? 12 मंथ्स लेफ्ट है ना. सो यू टू राइट योर 12. देन व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग. कब लास्ट ड्रॉ किया? मार्च का 1 तारीख. और कितना महीना बचा हुआ है एंड के लिए? 31 मार्च के लिए कितना महीना बचा हुआ है? ओनली 1 मंथ लेफ्ट. सो +1 by 2. So कितना होगा? 13/2, that is 6.5 months. So the average period will be 6.5 months. इजी था ना? बिगिनिंग से एंड तक एक बार काउंट कर लेंगे, फिर लास्ट ड्रॉइंग से एंड ऑफ द ईयर तक काउंट कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. इसका था बिगिनिंग ऑफ इफ पार्टनर विथड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. इजी था. फिर सेकेंड, मान लीजिए नेक्स्ट केस क्या है, जब पार्टनर ए मान लीजिए बिगिनिंग में विड्रॉल किए थे, अभी शायद वो मिडिल में कर रहा है. मिडिल कर रहा है मतलब क्या है? हर एक मंथ का बीच में, बिटवीन में कर रहा है. कैसा? अप्रैल 15 में विड्रॉल कर रहा है, मई 15 में कर रहा है और जून 15 में कर रहा है. ऐसा अप्रैल टू मार्च तक बिटवीन मिडिल में कर रहा है. तब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? समझ में आया? He withdrew in the middle of every month. Each and every month he withdrew in the middle. Then apply the formula. The formula is time left after the first drawing plus time left after the last drawing. Year 2 मिडिल में कर रहा है. So क्या करेंगे? फर्स्ट ड्रॉ कब किया होगा? ये अप्रैल 15 किया होगा. सो अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च तक कितना पीरियड लेफ्ट है? देखिए अप्रैल 15 टू मार्च अप्रैल 15 टू मार्च 31 तो कितना होगा? यस 11.5. द पीरियड विल बी 11.5. देन टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग. लास्ट ड्रॉइंग कब क्या होगा? ये
मार्च 15 में किया होगा. सो मार्च 15 टू 31st मार्च कितना टाइम है? हाफ अ मंथ. सो दैट इज 0.5 by 2. So 12 by 2, that is equal to 6 months. So here the average period will be 6 months. Easy था. Next, मान लीजिए और एक हम लोग पार्टनर है जो वो एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है. हर एक मंथ का एंड में वो विड्रॉ कर लेता है पैसा बिजनेस से. तब क्या होगा? एंड ऑफ द मंथ बोलने से क्या होगा? अप्रैल एंड में विड्रॉ कर रहा है, कंटिन्यू करते जा रहा है और मार्च एंड में भी विड्रॉ कर रहा है. तो फॉर्मूला अप्लाई करो. फर्स्ट कब विड्रॉ किया? अप्रैल 30. सो अप्रैल 30 टू 31st मार्च कितना महीना होगा? काउंट मई टू मार्च. हाउ मेनी मंथ्स? 11 months. Yes, 11 months. Here, end of, if a partner withdrew end of the month, then we have to write 11 months. Okay. When he made the last drawing, a last drawing made on 31st March. So अकाउंट भी क्लोज होता 31st मार्च को और ड्रॉ किया भी 31st मार्च को. सो कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई पीरियड लेफ्ट नहीं है. सो द बोथ द टाइम्स आर सेम 31st मार्च. सो नो टाइम इज लेफ्ट. सो यू टू राइट हियर 0. सो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता? 5.5. 5.5 months. ये तो इजी है ना. Beginning of the month, if a partner withdrew beginning of the month, the period will be 6.5. Middle of the month, you have to calculate for 6 months. And if a partner withdrew end of the month, then the period will be 5.5 months. Now, the next question. Suppose a partner withdrew each quarter. What is quarter? Quarter means quarter consists of 3 months. Quarter consists of 3 months. Here, the red color pen is written, no, this is a quarter. April, May, June is a quarter. July, August, September is a quarter. October, November, December is a quarter. And then January, February, March is also a quarter. So year consists of how many quarters? 4 quarters. So हमारे जो पार्टनर है वो उनका एक आदत है. क्या आदत है? एवरी क्वार्टर का बिगिनिंग में विड्रॉल करना. व्हाट इज दैट? एवरी क्वार्टर का बिगिनिंग में विड्रॉल कर लेना. अब ट्राई करेंगे अभी. सो फॉर्मूला अप्लाई करो, एवरेज पीरियड निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? यूज द फॉर्मूला. सो राइट, यूज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ अ पार्टनर विथड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. अरे क्वार्टर्स का बिगिनिंग में विथड्रॉ कर रहा है तब एवरेज पीरियड कैसा निकालेंगे? सो स्टार्ट. क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 months, राइट. सो मिस्टर ए विथड्रॉ कर रहा है अरे क्वार्टर का बिगिनिंग में. सो बिगिनिंग बोलने से कितना होता है? 1st अप्रैल में विथड्रॉ कर रहा है. सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट टू 31st मार्च? Obviously 12 months is left. So you are right, we have to write 12 months left. Then when he made the last drawing, फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग अप्रैल होता है, सेकंड क्वार्टर का बिगिनिंग जुलाई होता है, थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग सितंबर होता है और लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग जनवरी होता है. जनवरी में ये विथड्रॉ किया होगा 1st जनवरी. सो कब तक एंड होगा? 31st मार्च. हाउ मेनी मंथ्स इज लेफ्ट नाउ? ओनली 3 months लेफ्ट. सो राइट 12 प्लस 3 by 2. How much? 15 by 2. 7.5 months. The average period will be 7.5 months in case of a partner withdrew at the beginning of each quarter. If a partner withdrew every beginning of the if a partner withdrew fixed amount at beginning of each and every quarter, then the next question arises, sir, when a partner withdrew middle of the quarter, what will be the average period? Middle of the quarter same आप भी यूज कर सकते हैं. ऐसे थोड़ा ट्राई करिए. मिडल ऑफ द क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 months. इसके मिडिल पीरियड कब होता है? अप्रैल, मई, जून. मई का 15 इज द मिडिल, राइट. सो मई 15 से लेकर मार्च 31st टाइम कितना लेफ्ट है?
10 प्लस 0.5, जून से लेके मार्च तक भी नहीं 10 मंथ होता है और मेक अप 15 days. So how many months? 10.5 months for the beginning. Time left after the first drawing is middle में ड्रॉ कर रहा है. So 10.5 month is left after first drawing. When he made the last drawing क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च का मिडिल क्या है? फरवरी का 15 is the middle. So February 15 to March 31st. How many months left? 1.5 months left. So write here 1.5 months. 1.5 months divided by 2. That is 10.5 plus 1.5, 12. Then 2, 6 months. So you have to calculate average period for 6 months. Last one is left. Which one? If a partner withdraws fixed amount at the end of every quarter, हर एक क्वार्टर का एंड में विथड्रॉ कर रहा है. So you know the quarter. What is the first quarter? The June will be the end of first quarter. So he made the drawing on 30th June. कब ड्रॉ कर रहा है वो? 30 जून को ड्रॉ कर रहा है. So 30 जून से लेकर 31st मार्च कितना महीना होता है? June. 30 June. So leave the June. Starts from July. So July to March 9 month होता है. So 9 year. If a partner withdrew at the end of each quarter, then the time left after first drawing is 9 months, because already June is over, because he withdrew on 30th June. No, so we have to count from July to March. So how many months left? 9 months left. So when will be the last drawing? He made last drawing on 31st March at the end of the day. So no need to pay interest, because already there's no time left, isn't it? So no need to pay interest. So there will be no times left. So we have to write 0 divided by 2. That is 4.5 months. These are the average period. If you calculate average period, then the problem will be very easy for you, right? Let's start a problem, okay? Then you can easily understand how the average period will be used in calculation of interest on drawing. Let's start. Calculate interest on drawing of Mr. A at the rate of 12% per annum. This is interest on drawing. Interest on drawing is 12% per annum. The year closed on 31st March 2012. Mr. A withdraws 1,000 every month at the beginning of every month. मैं दोबारा बोल रहा हूं. मिस्टर ए एक पार्टनर है, वो जो है 1000 रुपीज हर एक मंथ का बिगिनिंग में ही विथड्रॉ कर लेता है. अप्रैल, मई, जून टिल मार्च तक 1000 रुपीज विथड्रॉ कर लेता है, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वो कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. देन कैलकुलेट कैसा होगा? कैसा कैलकुलेट करेंगे? यू नो द फॉर्मूला. द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू total drawing into rate of interest by 100 into average period. What is the total drawing? 1000 हर एक मंथ में 1000 ड्रॉ कर रहा है ना. So how many months? 12 months. 1000 into 12, 12,000. Total drawing is 12,000. What is the rate of interest? Rate of interest is already given in the question. How much? 12%. So 12 by 100. Now average period. अभी तुम लोग सीखे हैं एवरेज पीरियड. जब एक पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में विथड्रॉ कर रहा है तब एवरेज पीरियड कितना होगा? हम लोग सीखे हैं कितना होगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 month. So 6.5 month यहाँ पर आएगा. 6.5 by 12. Calculate. Right? So 120 into 6.5. So
कट कर लीजिए, 10 इंटू 12 120, 120 इंटू 6.5 इज 780, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया। सो लाइक दैट आप घर में प्रैक्टिस करिए। ये तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, आप इसको आप ट्राई करिए। इसमें मिडिल मान लीजिए, ये होमवर्क है आपके लिए, राइट। फिर एंड मान लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए घर में। या तो 10% को आप क्या मान लीजिए, 12% को 10% मान लीजिए और प्रॉब्लम करिए, प्रैक्टिस करिए। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू कैलकुलेट, राइट। नाउ नेक्स्ट ड्राइंग मेथड में जा रहे हैं हम लोग। ये मेथड क्या था, जब व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन अ फिक्स्ड इंटरवल में जब ड्रॉ कर रहा है, तब एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉज अनइक्वल अमाउंट एट डिफरेंट डेट्स। मिस्टर बी है, उनका कोई लिमिट नहीं है, मतलब एवरी मंथ ई विथड्रॉ सम डिफरेंट अमाउंट। फॉर एग्जांपल अप्रैल में 1000 रुपये विथड्रॉ कर लिया, मार्च में 2000 और नवंबर में 500, ऐसा इरेगुलर इंटरवल एंड डिफरेंट अनइक्वल अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है, तब ये मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल मेथड में यूज किए अभी, वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। इन दिस केस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द अदर मेथड। द अदर मेथड इज simple method and product method. When a partner withdraws unequal amount at different dates, then the interest on drawing shall be calculated with the help of simple method and product method, right? Okay, let's see simple method and product method. What is simple method? In simple method, the drawings were calculated for the period of usage. कितना महीने के लिए पर्टिकुलर ड्राइंग को यूज किया, and it is calculated for single drawing. Simple method is used for single drawing by the partner. Okay, so what will be the formula? The formula will be interest on drawing is equal to drawing into rate of interest by 100 into time. Time will be the time left. Okay, the simple one. Next one is product method. When there are more multiple drawings, अरे एक बार multiple withdraw कर रहा है, बहुत सारा drawings है, तब which method is used? Product method is used. How a product method will be useful? Here in the product method, to make it simple, we multiply drawing with the time period through which we can get the product, and we have to add all the product and use the interest on drawing formula, and interest on drawing will be calculated for 1 month. So this thing will be learned through by solving a question. Okay, let's see the question through which we can solve the same problem by both the method, by simple method as well as in a product method. Let's see, the formula is this one, and then the question is, I just read out the question here. What is the question? In a partnership firm, partners are charged interest on drawing at the rate of 12%. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12% है, और ईयर एंड्स ऑन 31st March 19, एंड द इंटरेस्ट चार्जेबल टू द पार्टनर्स आर, यहाँ दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? मंथ दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट कैसा? सो ऑन 1st May, फॉर दैट यू हैव टू हैव अ टेबल. Simple method, it is given in the question, that is date. Given in the question, the amount is 2000. He withdrew for 2000. 1st May में withdraw कर रहा है 2000 rupees. So how many times left now? 1st May to 31st March. How many periods left? 11 months left. Okay.
And second withdrawal is on 1st August. You withdraw on 1st August. The amount is 5,000. Then August to March कितना महीना होता है? 8 months. August to March 8 month period होता है. Then ये withdraw कर रहा है 30th September. सितंबर 30th ऑलरेडी हो चुका है. अक्टूबर से काउंट करिए. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो 30th सितंबर में 6,000 विथड्रॉ, 2,000 विथड्रॉ कर रहा है फॉर 6 month, अक्टूबर टू मार्च. देन 31st जनवरी, 31st जनवरी में विथड्रॉ कर रहा है. कितना अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है? 6,000 विथड्रॉ कर रहा है. So January already over, February, March, 2 months left. The last withdrawal is on 31st March. The amount is 2,000 for the period. क्योंकि 31st March is the end day, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रॉ और एंड ऑफ द ईयर सेम है. So no time is left here. No time is left. So now calculate separately. A simple method है. We have to calculate separately. So first make ली separately calculate करिए. कैसे करेंगे? Formula क्या है interest on drawing का? Drawing. That is 2,000 into 2,000 into what is the interest? 12% interest into how many months? The time period is 11 by 12. So cut it. $20 into 11, that is 220 rupees. The interest for the first drawing is 220. Then calculate for this one. He withdrew 5,000 rupees, 12% for how many months? For 8 months, 8 by 12. Cut it. 12 कट कर लीजिए. 580, 40, that is 400 rupees. Now then for this calculate 2,000 into 12% is interest. The period is 6 by 12. 12 कट कर दीजिए. 2 6 are 12, that is 120. Then for the fourth case, the drawing is 6,000. 12% is the interest and the period is 2 by 12. Cut and then 6 to the 12, it is 120 rupees. And as far as the last is concerned, here no time is left. The answer will be 0 only. 2,000 into 0, 2,000, because no need to pay interest at all. Now add all the amount. 220, 620, 860. So interest on drawing is equal to 860. This is the simple method, right? Simple method में क्या प्रॉब्लम है? जब मैक्सिमम मल्टीपल ड्रॉइंग हो जाता है सेपरेटली निकालना पड़ेगा. वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली. नेक्स्ट मेथड में जाएंगे प्रोडक्ट मेथड में. प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? सेम प्रॉब्लम को हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रोडक्ट मेथड में सीखने वाले हैं. कैसे सीखेंगे? सेम क्वेश्चन, same date, same amount, same month of period. The calculation will be separate. Date, amount, month, year. You have to write your product. How we can calculate product? Simple one, very easy one. Just multiply the amount with the time left. Just multiply 2,000 into 11. 2,000 into 11 is 22,000. Right? 5,000 into 8, 40,000. 2,000 into 6, how much? 12,000. Then 6,000 into 2, 12,000. And 2,000 into 0, how much? 0. Then you will get total product. Total product. So add it. Now the total product is 86,000. Now apply the formula. What is the formula for product method?
interest on drawing is equal to total product into rate of interest by 100 into 1 by 12. We converted the product into 1 month. Just apply the formula. Total product is 86,000 into rate of interest is already given in the question, 12% into 1 by 12. Cut it. The answer is 860. Which method is easy for you? When there is multiple drawing, which method is easy? This product method is very easy for you. In case of single drawing, you can use simple method. In case of multiple drawing, which one is best? Product method is best. It saves time. Okay. Next, we proceed to the assumption. In your question paper or in your question, the date of withdrawal is not given. Then, for how much period you have to calculate interest on drawing? If date of withdrawal is not given, you have to calculate for 6 months. जब क्वेश्चन में कब पर्टिकुलर पार्टनर विथड्रॉ किया ये दिया हुआ नहीं है, तब आपको एवरेज पीरियड कितना होगा? 6 मंथ का निकालना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ. Here, calculate interest on drawing at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2009. Drawing made during Mr. Rakesh is 30,000. राकेश कितना ड्रॉ किया? 30,000 ड्रॉ किया. कब ड्रॉ किया? क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है और ड्रॉइंग दिया हुआ है, लेकिन कब ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, कुछ दिया हुआ नहीं है. सो हाउ यू डू कैलकुलेट ड्रॉइंग? Just assume that if date of drawing is not given, you have to calculate only for 6 months. So calculate 30,000, 10%, 6 by 12. Okay. So you have to calculate through this. कितना आएगा? Cut it. 1 by 2. 15, 150, 1,500. चेक कर लीजिए इसको. Right. 1,500. Then last assumption. Which assumption? Suppose in your question paper or in your notebook, in your school questions, interest on drawing is given, but the word per annum is not given. Here, interest on drawing is 12%, for example, at 10%, and drawing is 30,000, and per annum is not given here. 10% per annum will be there in every question, but in this question per annum is not given. Then we have to assume it is for the whole year. Time factor is not considered here. So the calculation will be 30,000 into 10% only. So interest on drawing will be 3,000. Okay. So in this class we learn the calculation of interest on drawing in different cases. Let's recapitulate there. I start from beginning of every month. A partner withdrew at the beginning of every month, you know how much? 6.5 months. The same partner withdrew same amount or equal amount at the middle of every month is 6 months. Suppose if withdrew at the end of every month, then it will be 5.5 months. Average period will be 5.5 months. In case if withdrew at the beginning of every quarter, then 7.5 months. Use your leisure time wisely. Keep on practice.